Hello everyone. Hi students. I welcome you all to this session. So in this session, what we are going to study? So we are going to study about damped harmonic oscillator. The previous video, what we have studied about? So we have studied about simple harmonic oscillator. उसके solution के बारे में हमने बात करी थी. So if in case you have not watched that video, so I have provided the link in the description box also. So you can surely watch that video because अगर आप वो वाली video को देखोगे, then it will become quite easy for you to understand about the damped simple harmonic oscillator also. Okay. So now without wasting our time, so let's move on to damped simple harmonic oscillator. बेसिकली डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में whenever we talk about, so what we can say, ये क्या है हमारे पास, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो वर्क किस पर करता है, that works under damped force. So simple harmonic motion that works under damped force itself. Okay, so if in case now like you want to study about simple harmonic motion, so for that what you can do, you can simply watch the previous video. Okay, so a simple harmonic motion that works under damped force is termed as what? Damped simple harmonic motion. So in this we do have basically two types of forces. So हमारे पास कौन कौन से दो forces होते हैं? एक तो होता है due to SHM. So वो कौन सा force होगा हमारे पास? So that is going to be our restoring force itself. And restoring force ko hum, let's say that, okay, we are going to denote it with FR. So FR is equivalent to minus of KX. So K, what is K? K is going to be the spring constant and X is going to be the compression or extension. And the second force that is going to be there, that is because of due to motion itself. Okay, जो motion की वजह से होता है, so हम उसे क्या बोल देते हैं? That is going to be termed as the damped force only. And this damped force, let's say that, okay, it has been denoted with FD. So this FD is equivalent to minus of lambda times V. So if in case now we have to calculate the resultant, दोनों का resultant देखेंगे तो क्या आ जाएगा? So the resultant is going to be the sum resultant force. So resultant force will be equivalent to what? So we can say that will be equivalent to FR plus FD. So FR plus FD हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? That will be equivalent to minus of KX minus of lambda times V. Now, since we know one more thing, as per Newton's second law of motion, Newton's the second law of motion हमें क्या बताता है? That, okay, so F is equivalent to mass times acceleration, correct? And this force we can also rewrite it as mass times d square x over dt square. Correct. And similarly, अब यहाँ से हमें पता लग गया that, okay, so as per Newton's second law, external force, we can also say applied force is equivalent to what? md square x over dt square, and resultant force is this much. So from here, what we can say that mass times ma is equivalent to what? That is equivalent to, so minus of kx minus of lambda v. And हमारे पास a acceleration किसके equivalent था? So we can say this implies md square x over dt square is equivalent to minus of kx minus of lambda times v. Now since v is what? V is also velocity. So that means can we replace it with, so can we rewrite it like this? Minus of kx minus lambda dx over dt. Okay, and this we can write it once again. nt square x over dt square. अब यहाँ से, so what we are going to do? On rearranging. If in case we are going to rearrange all these terms, so from here what we can say, d square x over dt square plus lambda over m dx over dt plus k over m x is equivalent to 0 itself. अब यहाँ पर what we are going to consider, so from here what we can say कि let's say that, okay, so lambda over m. So consider lambda over m is equivalent to twice of r, which is going to be damped coefficient. And after this, we can say k over m. So k over m was equivalent to what? So that we have also studied in simple harmonic motion की जब हम derivation कर रहे थे, at that time we studied that k over m was equivalent to omega square, or we can also call it as omega naught square. So considering it as initial velocity.
So जैसे हमने पिछले so we can say in simple harmonic motion we consider it as omega square. So this omega square is going to be what? This is basically initial frequency itself. Initial frequency. Okay. So यहाँ से अब if in case we want to rewrite this equation. Okay. So let's call this equation as equation number first. Okay. So now if in case we want to rewrite this equation, can we rewrite it like this? That d square x over dt square plus. Now see one thing. Lambda over m. In place of lambda over m, we need to write what? Twice of r. So we can simply mention it's going to be twice of r dx over dt plus omega square x is equivalent to 0 itself. Okay, so this is going to be what we can say. This is second order differential equation of damped simple harmonic motion. Okay, अब इसके बाद हमें क्या करना है? Now we need to calculate its solution. Okay, अब what we are going to find out? We have to find out the solution. इसके solution को जब हम find out करेंगे, again we are going to consider करते हैं that let solution x be equivalent to, so we e raised to the power alpha times t. ओके सो अब यहाँ पर हमें dx over dt भी चाहिए, हमें d square x over dt square भी required है. So from here what we can say, dx over dt will be equivalent to alpha e raised to the power alpha t. And similarly we can say d square x over dt square. So this is going to be equivalent to what? Alpha square e raised to the power alpha t. Now let's just substitute in this equation. So d square x over dt square, that means alpha square e raised to the power alpha t plus twice of r dx over dt is alpha e raised to the power alpha t plus omega square e raised to the power alpha t, and this is going to be equivalent to 0. So now from this equation what we can do, we can take common factor. So common factor लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? E raised to the power alpha t. That means it's going to be alpha square plus 2 alpha r plus omega square, and this is going to be equivalent to 0. अब since हमने यहाँ पर कंसिडर किया था कि जो x था ना, that was equivalent to e raised to the power alpha t. Obviously ये तो फैक्टर हमारा 0 नहीं हो सकता है. So which factor? So ये हमारे पास we can say this quadratic equation can be equivalent to 0. अब since ये quadratic equation है, so in that case we need to find out its solution also. So solutions को कैसे find out करेंगे? So we can simply say that, so equation हमारे पास क्या है? Alpha square plus 2 r alpha plus omega square is equivalent to 0. So ये हमारे पास equation है. Now from here what we can say, हम क्या बोल सकते हैं? Alpha is equivalent to, let's write a formula, that is minus b plus minus under root of b square minus 4ac over 2a. Let's substitute in this equation. इस equation में values को substitute करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? So सबसे पहले देखो यहाँ पर a क्या है? a is equivalent to 1 हो गया, b is equivalent to twice of r, and c हमारे पास किसके equivalent है? c is equivalent to omega square. So now let's just substitute these values. So that means, so we can say this implies alpha will be equivalent to minus of 2r plus minus under root of, so 2r square. That means can we write it as 4r square minus 4ac. a is 1, c is omega square. So that means हम क्या लिख सकते हैं? 4 omega square over twice of a. Twice of a means that is going to be 2 times of 1, which is going to be 2 itself. So अब यहाँ से इस if in case we are going to consider this one under root part, ठीक है, under root part को अगर अब हम यहाँ पर consider करते हैं, so can we take 2 common? See, basically what I am trying to tell you is that minus of 2r plus minus, so under root of 4, then under root of r square minus omega square over 2. And under root of 4 is automatically going to give us what? So it's automatically going to give us 2 itself. So that's why can we write it like this, that it's going to be minus of r plus minus under root of r square minus omega square. And ये हमारा किसके equivalent हो गया? So this is going to be equivalent to alpha itself.
सो यहाँ से हमें एक चीज पता लग गई कि हमारे पास अल्फा के दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक पॉजिटिव टर्म्स में आ रहा है और एक नेगेटिव टर्म्स में. सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन से अल्फा वन विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, माइनस ऑफ आर plus under root of r square minus omega square. And similarly, alpha 2 will be equivalent to minus of r minus of under root of r square minus omega square. Okay, so from here what we can say, x will be equivalent to what? So let's consider कि हमारे पास x किसके equivalent है? a e raised to the power alpha 1t plus b e raised to the power alpha 2t. Okay, let's just substitute these values then. So from here we can say कि e raised to the power or a e raised to the power alpha 1. Alpha 1 was equivalent to minus of r plus under root of r square minus omega square into t. Correct? And similarly, we can say plus b e raised to the power alpha 2. Alpha 2 हमारा किसके equivalent है? Minus of r minus of. So what we can say, minus r minus under root of r square minus omega square times t itself. Okay, so now from this we can take common, which is going to be e raised to the power minus of r into t. That means what we can say, it will be a e raised to the power under root of r square minus omega square t plus b e raised to the power under root of r square minus omega square into t. But अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? We do have negative sign. Okay, so now what we can say from here, it shows, we can also mention that it shows solution depend upon solution of damped सिंपल हार्मोनिक मोशन किस किस पर डिपेंड कर रहा है? सो बेसिकली ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है. इट डिपेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. कौन कौन से वो दो फैक्टर्स हैं? लाइक यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दैट टिल द टाइम आई एम राइटिंग. Yes, so the first factor is going to be what? So we can simply say first factor अपने पास कौन सा हो गया? R. What was R? R is basically, we can say that's going to be damped coefficient. And after this, next one factor, दूसरा factor कौन सा है हमारे पास? So that's going to be initial frequency omega. So we can say that's going to be initial frequency. ओके, सो अब यहाँ पर ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे. सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्या है? सबसे पहले चलो इक्वेशन लिख लेते हैं हम अपनी. दैट x वाज इक्विवेलेंट टू व्हाट? e रेज टू द पावर माइनस ऑफ rt and then a e raised to the power under root of r square minus omega square into t plus b e raised to the power minus of under root of r square minus omega square into t. करेक्ट? यही हमारे पास इक्वेशन आई थी, सॉल्यूशन आया था. सो नाउ देयर आर गोइंग टू बी थ्री डिफरेंट केसेस. अब वो थ्री डिफरेंट केसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास थ्री डिफरेंट केसेस हैं. लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. फर्स्ट केस हमारे पास क्या आता है? या तो हमारी आर की जो वैल्यू है ना, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल देन ओमेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डैम्प फोर्स है, विच इज डैम्प फोर्स इज वेरी वेरी लेस देन इनिशियल फ्रीक्वेंसी. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज आर अंडर डैम्प्ड कंडीशन. अंडर डैम्प्ड कंडीशन. So we will calculate the solutions for all these. So underdamped, and the next one is going to be, now if in case R is equivalent to omega. So if R is equivalent to omega, so it is termed as critical condition. Critical condition. And similarly, if in case now the value of R is going to be very, very greater than omega, that means initial frequency. So this condition is termed as overdamped condition. Overdamped condition. So now what we have to do, so we have to calculate the solution for all of these one by one. So basically हमें displacement का relation बताना है, that okay, how displacement is going to vary. So let's start with underdamped condition. Okay, so underdamped condition में we are having this equation. इस equation को एक बार आप लोग याद कर लो.
ठीक है. सो however you need not to remember it, क्योंकि और if in case you are going to remember it, that's going to be a plus factor, because कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में, सिर्फ वो स्पेसिफिकली कोई एक कंडीशन देकर पूछ लेते हैं आपसे दैट ओके जस्ट कैलकुलेट द सॉल्यूशन फॉर दैट. सो उस केस में अब आपको ये पूरी डेरिवेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सो इन दैट केस यू जस्ट नीड टू राइट द इक्वेशन एंड देन यू कैन सॉल्व इट फॉर दैट, बिकॉज वो 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं. ओके. So now in this case, what we know that r is very, very less than omega, the root of r square minus omega square. Okay. So under root of r square minus omega square ko, can we write it like this? That under root of negative of omega square minus of r square. एक ही बात है, correct? अब since if in case I need to write it like this, under root of minus of 1, under root of omega square minus r square. Under root of minus of 1, ये हमारा किसके equivalent होता है? This is equivalent to iota itself, correct? इमेजिनरी नंबर. सो अब यहाँ पर हमें एक और चीज का पता है कि r इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा, सो दैट मीन्स हम r को इग्नोर भी कर सकते हैं. सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर. सो दैट मीन्स वी कैन से इट विल बी इक्विवेलेंट टू आइटा ओमेगा. सो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में कर देते हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट. सो इफ इन केस वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो फ्रॉम हेयर हमारे पास क्या आ जाएगा? x विल बी इक्विवेलेंट टू e raised to the power minus of rt a e raised to the power iota omega t plus b e raised to the power minus of iota omega t itself. So ये हमारे पास क्या आ गया? This is going to be one of the, we can say, एक equation आ गई. अब यहाँ पर if in case you remember the formula from trigonometry, e raised to the power iota theta, ये हमारा किसके equivalent होता है? This is equivalent to cos theta plus iota sin theta. And similarly, e raised to the power minus of iota theta is equivalent to cos theta minus of iota sin theta itself. अब क्या करेंगे? In the same equation, we are going to substitute the value. So what we can say, x equals e raised to the power minus of rt. Equation क्या थी? a e raised to the power iota omega t plus b e raised to the power minus of iota omega t. ठीक है. तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यूज को कर देते हैं सब्स्टिट्यूट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से e raised to the power minus of rt a cos theta, that means what we can say, cos of omega t plus iota sin of omega t. Then after this plus b, what we can say, cos of omega t minus iota sin of omega t. Okay. So अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है? So from here we can, on rearranging also, we can rewrite it like this: e raised to the power minus of rt a plus b cos of omega t plus iota a minus b sin of omega t itself. ठीक है. अब यहाँ पर a plus b किस, हम बोल सकते हैं that okay it's going to be constant, and since ये constant है, so let's consider it as that okay it will be equivalent to x naught sin phi. And why we are considering it like this, ये अभी next steps में पता लग जाएगा. Okay. Then similarly we can say a minus b will also be equivalent to constant, and that we can consider it as, or we can say iota of a minus b. Let's consider this as constant, and it will be x naught cos phi. इस इक्वेशन में दोबारा से कर देते हैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट. ओके. सो नाउ इफ इन केस वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, सो फ्रॉम हियर वी कैन से x नॉट e रेज्ड टू द पावर माइनस ऑफ rt, a प्लस b की जगह पर क्या कर देंगे? sin phi cos omega t प्लस cos phi sin omega t. किसका फॉर्मूला बन रहा है ये? यस. सो दिस इज बेसिकली गिविंग अस अ फॉर्मूला फॉर sin a plus b का. Correct. So it's giving us a formula for sin a plus b. Sin a plus b हमारा किसके equivalent होता है? Sin a cos b plus cos a sin b. Okay. So that's why we have taken these constants as x naught sin phi and x naught cos phi. Okay. So similarly, what we can simply mention, so this implies x will be equivalent to x naught e raised to the power minus of rt sin phi plus omega t. Or we can also write it as x naught e raised to the power minus of rt sin omega t plus phi. So sin omega t plus phi हमारे पास एक फंक्शन आ गया. And what we can say, so जो displacement है हमारी इस equation से, what we can simply mention that if
A is equivalent to x naught e raised to the power minus of RT. एंड ये हम ए क्या मान रहे हैं, ए इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड. ठीक है, ये ए कांस्टेंट वाला ए नहीं है. सो दिस ए वी आर कंसिडरिंग इट एज एम्पलीट्यूड. सो यहां से हमें क्या पता लगता है, फ्रॉम हेयर वी कैन सिंपली मेंशन दैट डिस्प्लेसमेंट decreases exponentially. Okay, similarly now if in case we have to calculate for, so second case हमारे पास किसका था, second case was for critical condition. एंड क्रिटिकल कंडीशन कौन सी कंडीशन थी हमारे पास, इन विच वी कैन से दैट जो हमारे ओमेगा की वैल्यू है दैट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू व्हाट, सो दिस ओमेगा इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू आर, बट एग्जैक्ट इक्वल नहीं है. ओके, so the value is approximately equivalent to. So from here what we can say, ये इक्वेशन में हमारे पास क्या था, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट. सो ये क्या है हमारे पास, ये टेंड्स टू जीरो है. ओके, सो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली एच के इक्विवेलेंट है. तो इक्वेशन में अगर अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सो वी कैन सिंपली मेंशन दैट यहाँ से हमारे पास x इज इक्विवेलेंट टू e रेज टू द पावर माइनस ऑफ आर टी. कौन सी इक्वेशन के बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन ओनली, जो सी मैंने कहा था आपको कि आप याद कर सकते हो. ओके, सो फ्रॉम हेयर वी कैन सिंपली मेंशन इट विल बी a e रेज टू द पावर एच टी, ओके, प्लस b e रेज टू द पावर माइनस ऑफ एच टी. अब एक चीज बताओ, e रेज टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम से, सो दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस x square over 2 factorial plus x cube over 3 factorial plus and it so on up to. Similarly, what we can say, the formula for e raised to the power minus of x, that will be equivalent to 1 minus x plus x square over 2 factorial minus of x cube over 3 factorial and plus and it so on up to. Correct. अब क्या करेंगे, now in this what we have to do, so basically हम इसी equation में values को substitute करेंगे. But one thing that we are going to consider over here is that we have to ignore substituting the x in the values by using binomial expansion, or we can also say binomial theorem, but ignoring higher order terms. ठीक है, हायर ऑर्डर टर्म्स को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. सो यहां से व्हाट वी कैन से, हमारे पास क्या था, e रेज टू द पावर एच टी, सो दैट मींस व्हाट वी कैन से e रेज टू द पावर एच टी विल बी इक्विवेलेंट टू 1 प्लस एच टी. Similarly, because we are ignoring the higher order terms, and similarly e raised to the power minus of ht will be equivalent to 1 minus of ht. Okay, so let's substitute in the equation. So x will be equivalent to e raised to the power minus of rt, a 1 plus ht, plus b 1 minus of ht. Okay, ये हमारे पास equation आ गई. Let's just solve it out a bit. E raised to the power minus of rt, so we can say a plus b, then plus h, a minus b times t. करेक्ट, कॉमन ले लिया हमने पहले, ये a प्लस b, ये दो चीजें ले ली, देन उसके बाद a h t एंड माइनस ऑफ b h t था, सो दैट्स व्हाई वी कंसिडर्ड h t कॉमन, a माइनस b. अब यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग, I know that, okay, you need to consider so many things, but yeah, you have to do that. There is no other option because एक क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर, a प्लस b को हम कंसिडर कर लेते हैं. ओके, सो p के इक्विवेलेंट, ओके, p being be a constant. ओके, एंड सिमिलरली h ऑफ a माइनस b को हम कंसिडर कर लेते हैं q के इक्विवेलेंट. सो these are basically what, these are going to be the constants p and q. ओके, so now from here what we can say कि हमारे पास x
is equivalent to what? E raised to the power minus of RT था. अब equation देखो, A plus B plus HA minus B times T. So can we write it like this, that it will be equivalent to P plus Q into T? लिख सकते हैं ऐसे? So from here what we can say that okay, this is going to be the value of displacement for critical condition or critical condition. And similarly, if in case we move on to the next one, so next one हमारे पास कौन सा था? Overdamped condition. Overdamped condition. Overdamped condition कौन सी होती है? So basically, overdamped condition हमारी होती है जिसमें हमारी R की value is going to be very, very bigger than as compared or greater than as compared to initial frequency omega. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंसिडर क्या करते हैं? लेट्स से दैट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू बीटा. सेम इक्वेशन में वैल्यूज को कर देते हैं सब्स्टिट्यूट. सेम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्विवेलेंट टू e रेज टू द पावर माइनस ऑफ rt. इक्वेशन क्या थी? विच इक्वेशन एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन. ठीक है, सो अब आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या पुट कर रहे हैं? हम पुट कर रहे हैं बीटा के इक्विवेलेंट. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन सिंपली मेंशन दैट विल बी a e रेज टू द पावर बीटा t प्लस b e रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा टाइम्स ऑफ t. अब एक और चीज को देखो यहां से. सो इफ इन केस वी हैव टू सॉल्व इट आउट, सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, दैट सो दिस implies x will be equivalent to, so that's going to be e raised to the power minus of rt a plus b e raised to the power beta t plus e raised to the power minus of beta t divided by 2 plus a minus b e raised to the power beta t minus of e raised to the power minus of beta t divided by 2. क्या किया हमने यहाँ पर? सी बेसिकली हमें एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? e रेज टू द पावर बीटा टी एंड e रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा टी. सॉल्व करके देखो, वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. ओके, सो दिस थिंग यू कैन गिव अ ट्राई. सो हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा. इफ इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस कि ये स्टेप कैसे आया, देन यू कैन श्योरली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आल्सो. ओके, नाउ आफ्टर दिस आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट e रेज टू द पावर थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस ऑफ थीटा ओवर 2, that is equivalent to cos of h theta. What is cos of h theta? So basically we can say cos hyperbolic formula. And similarly we can say e raised to the power theta minus of e raised to the power minus theta over 2. So that is equivalent to sin h theta. Sin h theta, cos h theta. So basically ये hyperbolic formulas. These are hyperbolic formulas. ओके, सो अब यहां से क्या करेंगे? इस इक्वेशन में वैल्यू को कर देते हैं सब्स्टिट्यूट. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, सो दिस इंप्लाइज x विल बी इक्विवेलेंट टू e रेज टू द पावर माइनस ऑफ rt a प्लस b cos h बीटा t प्लस a माइनस b sin of h into बीटा t. ठीक है, सो अब यहाँ पर भी सेम जैसे हमने किसमें किया था. सो इफ यू रिमेम्बर वन थिंग दैट वी डिड इन आर अंडरडैम्प्ड कंडीशन, हमने a प्लस बी एंड a माइनस बी को कुछ कंसिडर किया था एज अ फंक्शन ऑफ cos एंड phi. इन द सेम मैनर ओवर हियर आल्सो वी आर गोइंग टू कंसिडर. सो लेट्स से दैट a प्लस b हमारा किसके इक्विवेलेंट है? वी आर कंसिडरिंग इट एज x नॉट साइन ऑफ h phi. And similarly, a minus b is equivalent to x naught cos of h phi. So ये cos of phi, sin of phi were fine, but हम h phi क्यों mention कर रहे हैं? Because they are hyperbolic functions. Okay, and then we can consider them as constants. So now after this, so let's just substitute. So we can also mention if a plus b and a minus b are equivalent to this. So this implies यहाँ से हमारे पास x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? e raised to the power minus of rt. ओके, अब देखो a प्लस b की जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी x नॉट साइन h phi then cos h beta t, already it was there, plus
x naught cos of h phi sine h beta t. It was already there. Correct? ये भी था. Sine h beta t was already there itself. So from here, अब हम क्या बोल सकते हैं? Can we say this thing now? It is again making a formula for sine a plus b. Can we say this thing? Yes. So that's why what we can say that x naught will be equivalent to e raised to the power minus of rt x. Oh, sorry. X is equivalent. X naught kahan se aa gaya? Okay, x naught was already there. So this is x. Where is it? Yeah. It's not x naught. It's x. Displacement ko hum x consider karke chal rahe hain na. So that's why we can say it's going to be x. X is equivalent to x naught times e raised to the power minus of rt and then sine h phi plus beta t. So this is going to be, we can say that, okay, so this is going to be the expression for displacement, for displacement, for overdamped, for overdamped condition. Overdamped condition. So basically in your exam also they can ask you about underdamped condition, overdamped condition or critical condition, or sometimes they can ask you the general solution also. So you should know that, okay, how you have to solve these things. Okay, I hope that this part is clear to everyone that, okay, so how we have done this. So that's all about damped simple harmonic oscillator. Make sure that you are going to like the video, share the video and subscribe to the channel, that is Engineering Insights Physics Days. And if in case you have any doubt, you can surely let me know in the comment section also.